So we can say there are 26 letters and 44 phonemes are sounds in English. As far as phoneme is concerned, it is the smallest unit of sound that can change the meaning in a word. For example, हमारे पास two words है. We have got two words, bait and pet. These two words differ only in the first sound. Rest of the sounds are same, but this small change makes them completely different words, right? So these 44 sounds are made up of vowel sounds and consonant sounds. Just like vowels, letters जो थे वो A, I, A, E, I, O, U थे, ये letters में थे. ये 5 vowel letters बनते थे. और जब vowel की साउंड्स की बारी आई तो ये बन गए भाई साहब, ये 20 साउंड्स बन गए इन 5 लेटर्स के. इन 5 लेटर्स के ये 20 साउंड्स बन गए और 21 जो कंसोनेंट लेटर्स थे ये बन गए 24 साउंड्स या फोनीम्स. As far as vowels are concerned, ये जो vowels है, they are essential for word formation. As every English word contains at least one vowel sound. English में कोई ऐसा word नहीं है जिसमें vowel sound इस्तेमाल नहीं की गई हो. अक्सर लोग पूछते हैं कि my is a word where there is no vowel sound. तो ये वाई जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है वॉल का. तो एज कंपेयर टू वॉल phonemes, vowel sounds, the consonant letters are more stable one. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है, or you may be wondering why there are 26 letters and 44 sounds. Why there are not 26 sounds? Why there are 44 sounds? This is where the magic of language comes in. Similarly, we have letter C, which can sound like in cat and in circle. इस तरह बहुत सारे लेटर्स हैं, उनके एक से ज़्यादा साउंड है. बास के लेटर के हार्ड साउंड भी है और सॉफ्ट साउंड भी है. जस्ट लाइक सी के ये हार्ड साउंड हो गई और इसी तरह ये इसकी सॉफ्ट साउंड हो गई. सिमिलरली लेटर जी है हमारे पास. लेटर जी के जिम, इसमें जे की आवाज़ दे रही है और ये सॉफ्ट साउंड हो गई. इसी तरह गन में घ की आवाज़ दे रही है तो ये हार्ड साउंड हो गई.
Apart from that, the main reason of इसकी असल वजह that is historical accident. Historical accident. Just like other languages, English has also borrowed many words from other languages over centuries. Just like ये अल्फ़ाबेट हो गया, ऐसी तरह बायोलॉजी हो गई, ये टर्म्स ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। और इस तरह लैटिन से बहुत से अल्फाज ले गए हैं, जर्मनिक से ले गया है, फ्रेंच से ले गया है, अरेबिक से, इवन उर्दू से बहुत से अल्फाज ले गए हैं। अरेबिक से सोफ़ा और अल्कोहल, अलजब्रा, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि अरेबिक से लिए गए हैं। और उर्दू से फेमस वन बाज़ार और पायजामास, पजामा हो गया, जंगल हो गया। और द फेमस वन इज़ लूट, ये टर्म भी उर्दू से ले गया है, मीन्स plunder or steal, reflecting a common theme in colonial times. Those who have studied English literature, they are much familiar with this very term, loot. So छ साउंड हो गई और ये शिस साउंड हो गई। ये छ साउंड जो है ये जर्मनिक लैंग्वेज से लिया गया है, जर्मनिक लैंग्वेज से लिया गया है। और श साउंड जो है ये ओल्ड फ्रेंच से लिए गए हैं। इस तरह बहुत सारे अल्फाज से जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानों से लिए गए हैं। सो ओवर टाइम these words, these sounds were added, but the alphabet didn't grow to match them. So we end up with more sounds than letters.